Okay, so we'll start for the day. So देखो मो लास्ट क्लास तुम कहते जमी क्वेश्चन नंबर 16 आमर बाकी अच्छी जो आमर अशोकान एडिक्ट्स ऊपर तो this is the question about which Ashokan inscription indicates it did not abolish capital punishment. So I have prepared it, but we'll see about it in the next class because आज का क्लास रे टिके अधिका मे भी टिके अधिका हेई पारे तो to avoid boredom we'll see we'll discuss that question in the last. Okay, if possible we'll discuss it in the last. So हमारा last class जाए question number 30 जाए हमें जाइए now question number 31. So in which of the following geological periods volcanic lava flow took place in the Deccan Plateau of India? Okay, so Ordovician, Cretaceous, Carboniferous, and Miocene. So these are all related to the geological time scales. So ଆମର NCERT रे ଆମର NCERT ରେ जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स ऊपर खाली डायग्राम टा दे देछि बट तापर किछि डिटेल किछि एक्सप्लेनेशन करनी तो ए जिनसटा खाली जस्ट सुनी दियो मन रखी दियो हला मु किछि नोट फोट तार दोनी खाली जस्ट सुनी दियो ए जिनसटा तमरो एटा मे बी जते पचार प्रीवियस क्वेश्चन एटा मे बी आसी पारे ओके so these एटा सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल it has been divided into eons eras periods and epoch okay so जदि टाइम स्केल हिसाब रे देखिबो सबुठो छोटो टाइम होची इपो तापर आसियो पीरियड ओके तापर आसियो पीरियड then comes eon right then comes eon so गोटे जिंस देखो हमर अर्थ फॉर्मेशन जो ओरिजिन ऑफ सुपरस्टार 13.7 बिलियन इयर्स ago तापर अर्थ फॉर्मेशन स्टार्ट हैला हेडियन पीरियड रे ओके हेडियन इयन रे ड्यूरिंग ए टाइम रे अर्थ फॉर्मेशन हेतिला सो जस्ट एटमॉस्फेयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एबे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एमन सब अर्थ जेतला हॉट बॉल ऑफ गैस देला धीरे धीरे सॉलिडिफाई करला और सेही टाइम रे जस्ट हेडियन पीरियड आर्कियन पीरियड और प्रोटेरोजोइक पीरियड सॉरी इयन ए इयन मानकरे अर्थ रे जस्ट फॉर्मेशन हेतिला तो आमे क्लासिफाई करूची जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को कैम्ब्रियन पीरियड टू ता तळको जहा भी अछि दैट इज प्री कैम्ब्रियन टाइम्स ओके प्री कैम्ब्रियन टाइम्स कोन पई बिकॉज़ आवर करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन नॉट गो बियॉन्ड कैम्ब्रियन टाइम्स ओके तो इट कैन गो बट आमे जो अर्थ रो फॉर्मेशन रो एजिंग जो सब करिछु इट कैन गो बट इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट ओके सो with the current level of technology we have reached till Cambrian times okay तापर जहाँ भी सब अच्छी इतना डिटेल जना पड़नी तापर जो इतना डिटेल नहीं तो इसमें डिटेल से किसी क्लासिफिकेशन भी करा जाए नहीं ओके सो प्री कैम्ब्रियन पीरियड होची फॉर प्री कैम्ब्रियन पीरियड होची जोटा कि हमें पता डिटेल जाइने तो जेमति तमरो ता ऊपर टिक हेडियन पीरियड रे अर्थ फॉर्मेशन हेतला आर्कियन एरा sorry archean eon रे तमरा अर्थ वाज वेरी हॉट वायलेंट एरप्शन होतला प्रोटेरोजोइक इयन रे होची दिस एही टाइम रे वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट माउंटेन्स जेंति सो फॉर्मेशन हेतला ओके सो ए प्रोटेरोजोइक टाइम्स रे ही आरावलिस फॉर्मेशन हेतला ओके आरावलिस तमे जानछो दे आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड सो द आरावलिस कैन बी कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन टाइम्स प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स ओके ए जिनसटा मन रखियो आरावलिस टा कैम्ब्रियन पीरियड पूर्वरु हिच ओके फोल्ड माउंटेन्स बट एबे तो इरोड हे गलानी बट दे 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 फॉर्म बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड ओके तो एबे आसीबो तमरो पैलियोजोइक देखो जोइक सब देखि सेनोजोइक मेसोजोइक पैलियोजोइक जोइक माने लाइफ जोइक माने ओल्ड लाइफ ओके जोइक माने ओल्ड लाइफ तापर जो तमर इपोस रे जो सीन सब आसीबो ओके सीन तमर सफिक्स सीन माने न्यू लाइफ ऑलराइट सो देखो जोडा सीन आसीबो सेगुडा तमे जान जियो दैट इज रिसेंट जोथरे जोइक आसीबो सेगुडा तमरो ओल्ड ओके बट एटा देखो तमरो सेनोजोइक एथरे भी लाइफ रो डिवीजन अछि तमे कहबे जोइक भितरे भी सीन अछि
ओके तो ए टाइम रे देखो एटा होची जो सीन होची एटा मोस्टली रिसेंट कंपेयर्ड टू द अदर पीरियड्स ओके so you can also say এটা old life new life କରି କରି this you can associate with life only okay but scene is associated with newer times zoic is associated with older times okay so comes now paleozoic okay paleo meso তুমি জানছো যেମିତି paleolithic mesolithic neolithic পড়িছো paleo মানে old meso মানে middle period cenozoic ମାନେ recent okay so paleozoic ରେ ତମର 6ଟା ସ୍ଟେଜ ଅଛି Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. Okay. So Cambrian period, it was the earliest period when majority of the oceans formed. Okay. So about terrestrial life is nahi marine invertebrates just small so they were forming. Okay. गोटे जिनस देखिदबो तमरो blue green algae unicellular bacteria this came before Cambrian times. Okay. These were the Archean life forms. Archean life forms. Okay. এটা already ଦେଇଛି ଏଠି ତମର Archean so life started in the Archean eon okay life started in the Archean eon with blue green algae and unicellular bacteria ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ life ହେଲା Cambrian period ରେ just marine animal ରେ ଟିକେ ଟିକେ evolve କଲେ ଏବେ terrestrial life କିଛି ନାହିଁ just ଧୀରେ ଧୀରେ evolve କରୁଥିଲେ Ordovician period ରେ first evidence of vertebrates okay first fish no evidence of life on land okay Silurian ୟାକୁ Silurian ବି କୁହାଯାଏ okay Silurian भी कुहाଯାଏ both are same thing Silurian area so first trace of life on land okay life on land that is plants ମାନେ first ଆସିଲେ so this is this is Silurian era okay so in this time the Caledonian mountains were also formed okay ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ଏଟା may be ପଚାରି ପାରେ Silurian area ରେ okay Caledonian mountains so what are the Caledonian mountains they are occurring the mountain formation that has occurred in the central part of Asia that is the Urals and North America रे जो Appalachian mountains तमरा जो Scandinavian area रे जो mountains अछि those are called the Caledonian mountains okay they formed in the Silurian era okay so again ए टाइम रे भी तमरा आराबेड भी फॉर्मेशन चली ए टाइम रे ओके तो सिलुरियन एरिया पुणे आसला डेभोनियन इज एम्फिबियंस फिशेस ओके कार्बोनिफेरस एटा होची तम हम पे इंपोर्टेंट कार्बोनिफेरस बिकॉज़ एई टाइम रे कोन हला तमरो कोल फॉर्मेशन हला ओके देजी तमरो कोल बेड्स फॉर्मेशन हला सो एथरे दी प्रकार हे परिबो डिवीजन पुणी अपर कार्बोनिफेरस और लोअर कार्बोनिफेरस ओके तो अपर कार्बोनिफेरस कोटा अपर माने जो देखो जते ऊपर को जाउछे एज कमुची तळ माने तमरो एज बढ़ुची ओके सो व्हाट इज अपर कार्बोनिफेरस दैट इज यंग कोल ओके जेमति तमरो इंडियन कोल हो ओके जे इंडियन प्लेट टा मूव करची तमरो ओल्डर कोल होडा दैट इज इन अमेरिका यूके ओके से टाइम रे सेतोडा से प्लेट होडा इक्वेटर पाखे थिले तो सेठिकरे कोल फॉर्मेशन जो स्टार्ट हैला बिफोर इंडियन कोल ओके so upper carboniferous रे इंडियन कोल आसीबो यंगर कोल लोअर कार्बोनिफेरस रे ओल्डर कोल आसीबो दैट इज यूके एंड यूएसए एंड एई कार्बोनिफेरस टाइम रे गोटा हला तमर जो वेगनर को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो देइथलो ब्रेकिंग ऑफ पांजिया occurred in this carboniferous times okay breaking of Pangea according to this time okay so तमे जानछ जेमती लोरासिया आ गोंडवाना लैंड दीटा सेपरेट हे गला पांजिया सेपरेट हे गला लोरासिया नॉर्थ को पळेला गोंडवाना लैंड साउथ को पळेला दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेथिस सी okay so ए टाइम रे कोन हला बहुत डेंस और लग्जरियस वेजिटेशन थला ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट okay हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थला ए टाइम रे रेप्टाइल एम्फिबियन ए माने सब एमर्ज कले okay now ओके एबे कोन हला लैंडमास एबे लैंडमास देखो रेप्टाइल एम्फिबियन सब हेले तमर बट देखो तमर प्लांट्स माने सिलुरियन टाइम रे आछंदी कार्बोनिफेरस डेभोनियन और कार्बोनिफेरस जळकु बहुत ओडे बॉडी की बहुत ओडे बे बहुत ओडे ताकर डेथ हे गला डीके भी हेबा स्टार्ट कला ओके सो ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज रिपीटेड इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस कोल फॉर्मेशन occurred in carboniferous okay carboniferous तो वर्ड होची कार्बन इज स्टैंड्स फॉर कोल तो कोल एटा कार्बोनिफेरस संगे associated okay again तो ए टाइम रे ड्यू टू पोजिशनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स तमरो
अंटार्कटिका रे जो एबे सब ह्यूज कोल्ड डिपोजिट्स अछि ओके सो दैट इज द कार्बोनिफेरस टाइम्स ओके तो जानो अंटार्कटिका रे कोल्ड डिपोजिट अछि आर्कटिक रे किंतु पेट्रोल डिपोजिट अछि ओके कोल्ड डिपोजिट नहीं पेट्रोल ओके क्रूड ऑयल ऑलराइट so next comes the Permian times रे सेमति किछि सिग्निफिकेंस नहीं reptiles कम पावर okay then comes the Mesozoic era तीनटा फेज ट्रायसिक जुरासिक क्रेटासियस ओके ट्रायसिक एबे कौन हला तमरो बर्थ ऑफ डायनासोर्स फर्दर ब्रेकिंग ऑफ पांजिया जुरासिक रे अगेन पीरियड ऑफ डायनासोर्स देन क्रेटासियस पीरियड एटा तमरो पुनी इंपोर्टेंट क्रेटासियस जस्ट लाइक कार्बोनिफेरस क्रेटासियस इज इंपोर्टेंट ओके सो क्रेटासियस माने सेही टाइम रे तमरो लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शन और डीगैसिंग ऑफ अर्थ हला डीगैसिंग माने अर्थ रो जो सब गैस वाला बाहर की एटमॉस्फेयर को आसीबो तापर कूलिंग ऑफ अर्थ हे जिवो ओके डीगैसिंग ऑफ अर्थ हला तापर लार्ज स्केल मेटियोर इंपैक्ट ए टाइम रे हेतला ओके क्रेटासियस तमे सेटा को क्रेटर संगे एसोसिएट करि परिबो क्रेटर माने क्रेटर केमती फॉर्म हेतला मेटियोर मेटियोर शावर हेकी अर्थ को बाड़े की क्रेटर फॉर्मेशन हेतला सो क्रेटासियस तो से टाइम रे बहुत गोटे मेटियोराइट इंपैक्ट हेतला तो इट वाज ए पीरियड ऑफ मास एक्सटिंक्शन जेमति तमर 90% स्पीशीज डिस्ट्रॉय हे गला डायनासोर भी एक्सटेंड हे गले डीगैसिंग जे हम कहली मीथेन एमिशन हेतला तमर ग्लोबल कूलिंग भी हला और से टाइम रे ओ सॉरी जत डीगैसिंग जत हला तमर ये सब कवर पे ही जियो बट डीगैसिंग रे जते तमर मीथेन एमिशन बेसी हबो देन इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज़ वी नो मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस ओके तो एई टाइम रे देखो मेटियोर शोर काहे हेतला बिकॉज़ एई टाइम रे तमरो अर्थ रो एटमॉस्फेयर एते भलसे फॉर्मेशन हेई नथला दैट्स व्हाई meteor could reach earth they could did not burn up in the friction okay friction है कि burn हलानी but ए टाइम रे तमरो meteor shower हेतला क्रेटासियस टाइम रे अब ई क्रेटासियस टाइम रे ही तमरो इंडियन प्लेट वाज मूविंग इन साउथ हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द ओवर द रियूनियन आइलैंड्स ओके तो एई क्रेटासियस टाइम रे ही तमरो इंडियन बिकॉज़ इंडियन प्लेट वाज मूविंग ओवर द रियूनियन आइलैंड एई टाइम रे तमरो डेक्कन लाभा प्लेट्यू भी तयारी हेतला ओके रियूनियन आइलैंड्स ऊपर जाइतला रियूनियन हॉटस्पॉट रु तमरो डेक्कन लाभा प्लेट्यू तयारी हेतला ओके एंड ए टाइम रे जो डेक्कन लाभा प्लेट्यू हेतला इट वाज ए फिशर एरप्शन ओके तो एई जिनसटा मन रखियो क्रेटासियस रो क्रेटर जोगु मेटेरियल इंपैक्ट हेतला एज ऑफ मास एक्सटिंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन लाभा प्लेट्यू देन कम्स टर्शियरी टाइम्स ओके टर्शियरी टाइम्स रे अछि सब प्लियोसिन मियोसिन ओलिगोसिन इओसिन पैलियोसिन एटा एते भी इंपोर्टेंट नुह ओके फ्रॉम हमर जेंदी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू रु एते भी इंपोर्टेंट नुह जस्ट तमर जदी देखि दबो जदी जस्ट गोटे जानिबार अछि जदी पैलियोसिन की इओसिन टाइम रे ही तमर ग्रेट हिमालयस फॉर्मेशन स्टार्ट हला ओके ग्रेट हिमालय फॉर्मेशन स्टार्ट तमर ओलिगोसिन पीरियड रे सॉरी तमरो ई टाइम रे इओसिन पीरियड रे ग्रेट हिमालय फॉर्मेशन स्टार्ट हेतला ई ओलिगोसिन आउ मियोसिन टाइम रे तमरो मिडिल हिमालयस फॉर्मेशन हला मिडिल हिमालयस देन कम्स द प्लियोसिन ई वाले okay so eta formation of himalayas p can be associated with these time periods then comes the quaternary phase ra pleistocene also the ice age okay ice age एक गोटे दिन मन रखियो प्लियोसिन टाइम रे ही तमरा अर्ली ह्यूमन माने जस्ट जन्म होइतिले अर्ली ह्यूमन तमरा आइस एज से टाइम रे निएंडरथाल्स ओके निएंडरथाल्स ए टाइम रे आसले तमरा प्लिस्टोसिन टाइम रे ही तमरा होमो सैपियंस इवॉल्व कला ओके दैट इज sorry early human ancestor এটা this okay so this is related to the monkeys okay homo sapiens and ei time रे pleistocene area रे pliocene और pleistocene मझिरे ही तमरो homo sapiens and neanderthals okay neanderthals तापर extinct हे गले only homo sapiens रहिले then comes the modern man in the holocene era okay holocene area in the 0 to 10,000 वर्षरु आज पर्यंत till present okay 10,000 2 million years भितर निएंडरथाल्स होमो सैपियंस आ अलगा सब माने मंकी मानक इवोल्यूशन हे कि जस्ट ह्यूमन माने परफेक्टली फॉर्मेशन हेले 10,000 इयर्स पूर्वरु ही
Homo sapiens as we know today they came into existence. तमरो एबे भी तमरो देखियो तुम करंट अफेयर जदी पढिथिबो आ गोटे इपो ऐड करिया को प्लान अछि that is anthropocene. Okay, anthropocene, that is humans have modified the earth environment to such an extent that it needs to have another epos. Okay, so ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା କଥା, ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଦେଲ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଦେଲ ତମେ ଏଟା ଯଦି ନୋଟ କରିବା କଥା କରିଦବ, ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏରାଟାକୁ ଯୋଉ कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन डिवोनियन कार्बोनिफेरस फॉर्मियन एटाକୁ या ପାଇଁ ଗୋଟେ शॉर्टकट जोटे कॉस्ट डीसीपी। ओके, एमजी कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस फॉर्मियन। ओके, सो कॉस्ट डीसीपी तमरा बाकी एई जो एई टाइम स्केल टा एते इंपोर्टेंट नो बट कैन बी एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस प्लेस्टोसीन एज आइस एज एटा भी इंपोर्टेंट तमर 10,000 2 मिलियन इयर्स भीतर। ओके, बिफोर प्रेजेंट। तो तो एटा गला तुम जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमर पचार थला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड वोल्केनिक फ्लो ऑफ द डेक्कन लावा प्लेट्यू एज वी हैव सीन इट अकर्ड इन द क्रेटासियस टाइम। बाकी तमर देखो ऑर्डोविशियन कार्बोनिफेरस मियोसिन एटा सीन देछि माने दिस इज न्यू। बाकी एई जो तीनटा को अछि तमर दैट इज पीरियड। ओके, दिस इज ए इपो। ओके, तो 31 नंबर क्वेश्चन गला। Now next comes the next question. Okay, so question 32, the Black Forest Mountain is an example of, see, this eta hoji gote host mountain block mountain deji, तो तमरा 32 रो आंसर इज बी ब्लॉक माउंटेन। ओके, सो विल सी हाउ। सो जतले तमे जानि थिबो तमरा जतले फोल्डिंग गोटे हुए, फोल्डिंग रे दीटा प्लेट आसी की फोल्डिंग रे दीटा प्लेट आसिकी माड़ हुए, गोटे प्लेट सबमर्ज करिवो, गोटे प्लेट एमर्ज करिवो। ओके, ड्यू टू दिस कंप्रेशन गोटे प्लेट रो जो जगह वीक पार्ट सेठी रे कंप्रेशन हेगी से मटेरियल टा इट राइजेस एज अ माउंटेन, दीज आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। ओके, फॉल्ट माउंटेन, सो फॉल्ट कोठी जेतेबेले तमरो लैंड मास अछि ता तळे जदी तमरो लाभा लाभा फ्लो जदी एमती अछि एटा कौन करे ये जो फ्लोटा एमिति रुहे जेमति हमरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जोटा तने जानि थिबो। ओके, ड्यू टू दिस एक्टिविटी of the lava, so what happens, a plate टा एट जागर भांगी जीवो। ओके, तो एटा याडू जीवो, एटा याडू जीवो। so because of this तो एटा कोन होलो because of tension। ओके, because of tension or because of compression। ओके, दीटा सपोज ब्लॉक अछि तमान आसीबे कंप्रेस करिवे, कंप्रेस कला बेलकू मे बी तांकर को जगह क्रैक आसी जीवो होचे। ओके, गोटे यार कंप्रेसर जदी क्रैक आसी गला गोटे जगह रे, सपोज एई जगह क्रैक आसी गला। ओके, एई जगह क्रैक आसी गला तो जते एटा कंप्रेस करिवे तो एई ब्लॉक टा उठी जीवो ऊपर को। ओके, एई ब्लॉक टा ऊपर को उठी जीवो और मे बी जदी जदी एई दी जण सेपरेट करी गले, जदी भी तांका मझिरे गोटे ब्लॉक जदी रहिला, ओके, तो ए ब्लॉक टा तळु को पळेबो आउ ए प्लेट माने जदी सेपरेट कर जिवे। ओके, गोटे ब्लॉक तळु पळेबो, एई दुटा सेपरेट कर जिवे। एई जो जिंसटा एईटा होची ब्लॉक माउंटेन नो फॉर्मेशन। ओके, so block mountain formation, so block mountains these are also called fault mountains। ओके, फोल्डिंग रे हुए फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्टिंग रे हुए ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, तो ब्लॉक रे भाग भाग हो जाए। ओके, सो एडी देखो तमर जोटा फॉल्ट हे गला, देखो एडा एडा सपोज डाइवर्जेंस करूची तो जो जगह रे फॉल्ट हे गला, जो जगह रे लैंड तळु को पळेला। ओके, एबे कोन लैंड ऊपर गोटे जगह तळे रहइबो, गोटे जगह ऊपर रहइबो, जो जगहटा दिस अप्रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड द हॉर्स्ट, दिस जो जगहटा तळु को पळेला दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्राबेन। ओके, horst and graben, these are features of block mountains। Okay, and the faulting ro tamara due to tensile or compressive forces tamara horst and graben feature ase। Okay, so black forest mountain। Okay, black forest mountain tamara germany re achi। Okay, so this is the black forest mountain tamara germany re achi। Okay, now tamara एपटे फ्रांस रे tamara भस्जेस माउंटेन अछि। ओके, तो कहि छी तमरा एई जगह रे ड्यू टू
फॉल्टिंग तमरो ब्लैक फॉरेस्ट भी गोटा सेटा गोटे जंगल बट सेटा भी गोटा अप्रेस्ड पार्ट ओके इट इज ए सिस्टम ऑफ ब्लॉक माउंटेन ओके से ब्लॉक माउंटेन रो फर्स्ट होची ब्लैक फॉरेस्ट वर्सेस तार ग्राबेन होची ए जो राइन रिवर तमे देखुछ द ग्राबेन होची द अपर पार्ट ऑफ राइन वैली ओके दैट इज द ग्राबेन जेमदी तमरो हॉस्ट होची एपटे देखो तमरो जेमदी सेंती फॉल्टिंग हेतला एपटे जेमदी तमरो गोटे पटे फ्रांस पटे रहला वर्सेस एपटे रहला तमरो ब्लैक फॉरेस्ट ओके तापर तमर जो डाउनवर्ड पार्ट रहिला दैट इज द राइन वैली ओके दैट इज द ग्राबेन एरिया ऑलराइट सो एटा होची तमरो स्ट्रेटिकल फॉर्मेशन तमरो जुरा माउंटेन्स ब्लैक फॉरेस्ट दीज आर पार्ट ऑफ द सेम हॉर्स्ट ओके भोजेस माउंटेन तार तळ पार्ट होची राइन वैली तो इंडिया रे भी तमरो सेम फीचर अछि तमरो विंध्य और सतपुरा दे आर द ब्लॉक एंड हॉर्स्ट माउंटेन्स ओके सो ए जो ब्लॉक और हॉर्स्ट और ग्राबेन देखिला तो एथिरे जो ए जो तळु को पळेला एटे गोटे स्टीप स्लोप आसीबो okay this steep slope is called scarp or escarpment all right जहाँ भी ब्लॉक माउंटेन रे तमर जदी स्टीप स्लोप आसीबो जो जगहटा दैट फीचर इज कॉल्ड द एस्कार्पमेंट ओके तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन तो देखो एटा तमर हॉस्ट माउंटेन ब्लॉक माउंटेन तो एटा वोल्केनिक माउंटेन फोल्डेड माउंटेन तमे जानिलो दीटा जतले आसी पाखु को आसीबे टेक्टोनिक प्लेट ताकर कंप्रेस करके फोल्ड माउंटेन करिवे वोल्केनिक फीचर रे भी माउंटेन हे परियो जस्ट लाइक तमर जो रियूनियन हॉटस्पॉट रे जतले एबे रियूनियन आइलैंड्स हो तमर इंडोनेशिया आर्किपेलागो इंडोनेशियन आर्किपेलागो इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड है कि बट वोल्कानो है कि जस्ट तयारी है तमर हावाईयन पीक एगुड़ा सब तमर वोल्कानिक माउंटेन रे जीवो ओके ब्लॉक माउंटेन ए ब्लॉक माउंटेन तो देखिलो तो हॉर्स्ट हॉर्स्ट माउंटेन सेमती किछि नाही हॉर्स्ट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ब्लॉक माउंटेन ग्राबेन इज आल्सो ए फीचर ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स ओके तो हॉर्स्ट माउंटेन किछि नाही तो ऑप्शन ए हबनी ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओके तो देखो हॉर्स्ट माउंटेन सेमती किछि नाही हॉर्स्ट इज द अप्रेस्ड पार्ट ओके ऑफ द माउंटेन ओके बट हॉर्स्ट माउंटेन सेमती किछि नाही ब्लॉक माउंटेन रे तमरो हॉर्स्ट ऑफ ग्राबेन इंक्लूडेड ऑलराइट सो क्वेश्चन नंबर 32 गला नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी तो देखो इतने मु तुम देख देछि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी माने ओशन सरफेस ऊपर तमरा सैलिनिटी केते कोन अछि ओके जोडा रेड एरिया दोज आर मोर सलाइन जोडा कंपैरेटिवली येलो एरिया दोज आर लेस सलाइन ओके एटी तमर देछि तमरा नंबरिंग ओके तो नंबरिंग टा टिके बुझिदा सपोज 31 व्हाट इज 31 तो सैलिनिटी को केमते डिमार्केट करा जाय salinity is denoted as salt dissolved in 1 kg of water okay the grams of salt okay salinity grams of salt dissolved in 1000 gram of water okay so 31 माने 31 grams of salt in 1 kg of water okay so it is expressed as parts per thousand okay तो एटा होची 31 38 मींस हाई सैलिनिटी पर रेड जोटा तो रेड होची तमर देखो इंडियन ओशन हो पैसिफिक ओशन हो तमर एई पार्टटा हो अटलांटिक ओशन रो सैलिनिटी अधिका ओके सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी दैट विल बी अटलांटिक ओशन ओके तो तार रीजन टी देखि दवा ओके सो गोटे दिनस मन रख तमे जानि थिबो एटा hot water can hold more salt okay hot water can hold more salt that's why it has more salinity if you consider the same volume okay cold water रे तार वाटर रे इंटरमोलिकुलर स्पेस कम अछि जेतु कम अछि इंटरमोलिकुलर स्पेस से बेसी सॉल्ट होल्ड कर परिबनी कोल्ड वाटर हैज लेस salinity ओके लेस salinity सो देखो salinity रो वेरिएशन विथ डेप्थ ओके salinity रो वेरिएशन विथ डेप्थ देखो तमरा इक्वेटर रे कोन हुए देखो तो फर्स्ट एटा होची salinity लो टू हाई एटा होची विथ इंक्रीजिंग डेप्थ तो इक्वेटर रे तमरा कोन हुए इक्वेटर रे ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल फ्रेश वाटर एडिशन हुए प्लस तमरा सन भी अच्छी बट ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल तम फ्रेश वाटर भी ऐड हुए सो
salinity is comparatively low. Okay, salinity is comparatively low. Subtropics रे कौन हुए? Subtropics रे तमरा evaporation बहुत अधिका अच्छी, rain कम हुए. Okay, that's why surface salinity is more compared to equator. Okay, so that's why surface salinity of subtropical area is more compared to equator. Polar latitudes रे कौन हुए? तमरा ए जिनसटा vary करे. Okay, एइथरो एतिकी vary करिवो. Why? बिकज तुम सीजन देखिकी जदि समर अच्छी तो आइस विल मेल्ट इन पोलार एरिया, आइस विल मेल्ट तो मोर फ्रेश वाटर एडिशन हम बेसी फ्रेश वाटर एडिशन है एगेन सालिनिटी कमिज. ओके, तो जदि एबे पुणी शीत दिन तुम फ्रेश वाटर फ्रीज कर तो फ्रेश वाटर जब फ्रीज कर तो सल्ट वाटरटा रन द सरफेस वाटर विल बी सालाइन. ओके, सो ये जिनसा भैरी करे. बट तुम डीप ओशन रे तुम सालिनिटी बेसी किसी वेरिएशन करे ना. ओके, डीप ओशन रे दिस इज कोल्ड वाटर एंड salinity variation बेसी करे नहीं. ओके, अगेन सब एरिया रे पोलर एरिया हो इक्वेटर एरिया हो सबट्रॉपिकल एरिया हो सब बड़े कांस्टेंट रहइबो salinity. ओके, तो थिंक एई जिंसटा एई ग्राफटा एठी भी रिफ्लेक्ट करूची सब ट्रॉपिक्स एरिया रे. ओके, दिस इज द सब ट्रॉपिक्स एरिया. ओके, सब ट्रॉपिक्स एरिया रे देखो तमर salinity अधिका रहउची. ओके, salinity अधिका रहउची. इक्वेटर एरिया, इक्वेटर दिस इज द 0 डिग्री तमर salinity एते नाही. ओके, आ जदि पोल को पळेबा अगेन salinity तमर कम अछि. ओके, सो दिस ग्राफ इज रिफ्लेक्टेड इन हियर. ओके, सो आ गोटे फेनोमेना हुए तमर Atlantic Meridional Oceanic Circulation. Okay, AMOC. Okay, Atlantic Meridional Oceanic Circulation, or it is also called thermohaline circulation (THC), or it is also called the Global Conveyor Belt System. ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट तो कौन हुए तमरो देखो तमरो एटा होची पूरा एंटायर वर्ल्ड ओशन में चले. दिस फेनोमेना हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द वर्ल्ड्स ओशंस. ओके, तो कौन हुए तमरो वार्म सरफेस फ्लो, सरफेस वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट, दैट्स व्हाई इट इज वार्म. तो सरफेस वाटर फ्लो एमती आसे अटलांटिक एरिया को जाए, ए जो सॉरी आर्कटिक एरिया को जाए. आर्कटिक एरिया जेहेतु कोल्ड वाटर इज डेंसर. ओके, तापर सेटा तळु को पळेबो, ओशन बॉटम को पळेबो, ओशन बॉटम को आसिकी से एई पाथ फॉलो करिवो. ओके, गोटे ब्रांच पळेबो इंडियन ओशन आडू को, गोटे ब्रांच पळेबो पैसिफिक ओशन आडू को. दिस कोल्ड वाटर विल एमर्ज इन 2 पॉइंट्स, दैट इज इन इंडियन ओशन आउ नॉर्थ पैसिफिक ओशन. एई दीटा जगह रे एमर्ज करे. एमर्ज कला परे पुणी बैक जाए से पटे पुणी सेई सेम पाथ. ओके, लाइक ए लूप. एई पार्टटा भी एमर्ज करे पुणी सरफेस वाटर संगे एबे से चारियाडे बुल जाइकी सरफेस वाटर एज ए सरफेस वाटर इट विल फ्लो, इट विल अगेन बिकम हॉट, इट विल गो देयर एंड तळु को पळेबो. ओके, तो डाउन तळु को डाउन जाउची गोटाय पॉइंट रे, ऊपर आसुची दीटा पॉइंट रे. ओके, गोटे नॉर्थ पैसिफिक आउ नॉर्थ इंडियन ओशन. ओके, आमे जानिचु कूल वाटर आमे जे देखिलु cool water, cold water has less salinity. So देखो इंडियन ओशन रे आउ नॉर्थ पैसिफिक ओशन रे एई दीटा जगह रे जेहेतु तमरो ऊपर को आसुची तळ कोल्ड वाटरटा, दिस टू एरियाज विल हैव लोअर salinity. ओके, आउ तमरो गरम पानीटा. ओके, आ तमे देखिलो एई एरिया रे तमर आटलांटिक ओशन रे कोन पूरा सरफेस वाटरटा फ्लो करूची, वार्म वाटरटा सरफेस रे फ्लो करूची, तो सेटा गरम ही रहिबो. ओके, हॉट वाटर मोर salinity. तो जेहेतु एटा पूरा फ्लो करूची आटलांटिक ओशन रे, तो आटलांटिक ओशन रे फ्लो करूची एटा सालाइन ही रहिबो पूरा. ओके, सिमिलरली ए तमरो देखो पैसिफिक ओशन आसी कि एमती ही कि जाउची, तो ए एरिया रे भी सेमती किछि उठुनी माने सॉरी सेटा को कहंती अपवेलिंग आ डाउनवेलिंग. ओके, तो एठी किछि सेमती अपवेलिंग होउनी से, तो सेत पई एठी भी तमरो टेंपरेचर अधिका रहइबो, salinity अधिका रहइबो. ओके, again please note this AMOC or thermohaline circulation has not been completely understood by scientists. Okay, so यार बहुत स्लो रे ही ए जो फेनोमेना टा एटा बहुत स्लो रे ही हुए. ओके, सो इतने स्लो जे it roughly takes about 1000 years for a water molecule to complete the entire cycle. All right, a global conveyor belt system. All right, so देखिलो, so I think this explains why Atlantic waters are more saline compared to the other areas. Okay, so because एटी वार्म वाटर ही फ्लो करूची, एटी
अपवेलिंग दुईटा जगह होची डाउनवेलिंग केवल गोटे जगह होची ओके जो जगह अपवेलिंग हबो वार्म वाटर विल मिक्स विथ हॉट वाटर एंड इट विल मेक द हॉट वाटर कोल्ड ओके तो कोल्ड वाटर रे सैलिनिटी कम ओके तो प्लीज नोट दैट तमे भाबुथो जदी ओशन रो तळ पार्टटा होची अगेन देखो एटा देखो सरफेस पार्ट रे ही तमरो बेसी सैलिनिटी वेरिएशन रहिबो तळ पार्ट रे बेसी सैलिनिटी वेरिएशन रहिबो ओके तो जते बेले कोल्ड वाटर टा ऊपर को आसुची से सॉल्ट को धरिक आसुनी से खाली कोल्ड टेम्परेचर टा धरिक आसुची ओके तो सेमिति कंफ्यूज होबनी जे एटा माने सपोज कोल्ड वाटर तो जदि से सॉल्ट पुनी अधिका धरिक जदि ऊपर को आसथो ताहाले कोन होबो तो सेमिति होएनी ओके so again it is also very slow process so it will take time all right so Atlantic Ocean is the answer now comes to the next question which of the following ocean currents is known as specific weather current okay तो किसी तमे जदि न जानिथिबो एलिनो तमे तो जानिया कथा बट इवन इफ तमे जदि न जानिथिबो एलिनो इज द आंसर ओके बाकी एगुडा सब ओशन करंट्स एलिनो सेमति किसी करंट नाही एलिनो इज ए फेनोमेना इट इज नॉट ए करंट ओके सो तमे जानछो एलिनो केमति होए ओके so cold current and warm current eta tama insert diagram see this is one of the best diagrams of ocean currents okay so cold current or hot current tamara Humboldt current or Peru current tamara it is a cold current due to एठी तमरा अपवेलिंग हुए ओके अपवेलिंग रु तमरा Humboldt current आसे ओके सॉरी Humboldt current सरफेस रे ही बुए सरफेस रे बुए इक्वेटर तापर ए पटे एमति जाय विथ ट्रेड विंड्स ताको ड्राइव कर नेबे से ए पटे जीवो जेतु एटा ए पटे जीवो ए जो सरफेस रे जो वाटर टा पळेबो सरफेस वाटर जेतु पळेबो ता परे सेठो अपवेलिंग हबो ओके तळु कूल वाटर अपवेलिंग हबो ऑलराइट सो एटा कोन होय ना ए पटे जीवो इक्वेटर बाटे जीवो ए पटे आसी की ए पटे कोन ए वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रे वाटर विल accumulate okay this accumulated warm water in 4 to 5 years accumulated warm waters at the western coast of Pacific flows backwards when the trade winds are weak okay जेतल trade winds weak हे जिवो then weak backward flow करिवे they will again suppress the Humboldt current ए डायरेक्शन जाउची एबने काउंटर करंट एबे ताको सप्रेस कर देबे ओके ड्यू टू सप्रेसिंग ऑफ द Humboldt current तो पूरा ग्लोबल रे गोटे वेदर फेनोमेना हुए दैट इज द एल निनो ओके एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन इट इज द one phase of ENSO okay so this is a specific weather current okay which of the following ocean currents is a specific weather current okay so El Nino eta imti daba katha no El Nino is not a current okay it is a phenomena okay Benguela current Kuroshio Aguilas eta tame janicho Benguela current is a cold current Aguilas current is a warm current and the Kuroshio again warm current eta tame janicho tama static geography re okay now comes the next question 35 which of the following atmospheric layers ozone gas is concentrated okay ozone gas is concentrated ଆମେ ଏଟା previous OCS 2018 previous question भी ଦେଖିଥିଲେ तमरो okay question number तमरो 74 okay so question number 74 तमरो which of the following most abundant greenhouse gas tropospheric ozone जेतो tropospheric ozone थिला या ऊपर ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर अच्छे ट्रोपोस्फीयर अच्छी बट स्ट्रेटोस्फीयर रे दिस इज गुड ओजोन दिस इज ट्रोपोस्फीयर जगह आसीबो दैट इज बैड ओजोन ओके सो तमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर ओके स्ट्रेटोस्फीयर आ जो अलग ऑप्शन देछि ट्रोपोस्फीयर मेसोस्फीयर आयनोस्फीयर तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऊपर टिके देखि देबा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तमरो एनसीईआरटी रो ओके सो zone separating troposphere from stratosphere is known as tropopause. The air temperature at tropopause is about -80 over equator and about -45 over poles. Okay, so तमर कौन हुए तमरा equator 0 degree, this is 90 degree, these are the poles. तो से कौन सी तमरा troposphere रे tropopause रे it is about -80 degree in the equator. तमरा polar area रे it is -45 degree Celsius in the poles. Okay, so why this variation? तो 0 degree equator रे बेसी तमर sunlight पडुची तमे you know due to adiabatic cooling when air rises upwards due to adiabatic cooling it loses temperature. Okay, तो air जत्ते ऊपर को जीवो से सेते cooling करिवो आ जत्ते ऊपर को जिया पई ता एनर्जी दरकार sunlight. Okay,
ताको हीट जते अधिका आसीबो तापर सेते एनर्जी आसीबो एनर्जी थिबो ऊपर जिया पई 0 डिग्री रे बहुत सनलाइट अछि तो एयर कैन ट्रैवल मच हायर जते ऊपर जिवो सेते कूलिंग हबो दैट्स व्हाई इक्वेटर ऊपर -80 डिग्री पोलर एरिया रे तमर सनलाइट नाही एनर्जी नाही फॉर द ट्रैवल एयर टू ट्रैवल अपवर्ड्स तो बेसी ऊपर जाई परिवनी तो -45 डिग्री अगेन तमर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो सब अछि तमरा हेडली सेल फेरल सेल ओके तो सेगुडा भी तमरा इंपैक्ट करे तो जेहेतु 90 डिग्री ऊपर बेसी ऊपर जाई परिवनी तो -45 डिग्री बेसी टेम्परेचर डिक्रीज हबनी ओके सो दिस इज द ट्रोपोपॉज एटा troposphere alright so -80 -45 temperature at tropopause is nearly constant and it is called a tropopause stratosphere is found above tropopause and extends up to a height of 50 km okay एटा तमा देखो एठी किछि समय परंतु ट्रोपोपॉज जाय टेम्परेचर कमिला एबे टिके कांस्टेंट रहिबो तापर पुनी टेम्परेचर बढ़िबो टेम्परेचर काहे की बढ़िबो बिकॉज़ स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर अछि ओके हमें लास्ट टाइम देखथिलु ओजोन इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस ओके ओजोन इज ए ग्रीन हाउस गैस concentrated mostly in about 15 to 35 kilometer above the ground level okay so 15 to 35 kilometer above ground that is the concentration of ozone layer absorbs UV radiation and shields light from earth from intense energy okay so because ये absorption करे sunlight को that's why temperature rises then comes the mesosphere lies over stratosphere which extends up to height of 80 km in this layer temperature starts decreasing with the increase in altitude and reaches up to -100 degree at the height of 80 km okay so because mesosphere रे ओजोन नाही ग्रीन हाउस गैस नाही दैट्स व्हाई ए लेयर टा कूल हे जाय ओके मेसोस्फियर तापरे नेक्स्ट कम्स द थर्मोस्फियर okay upper limit of mesosphere is known as mesopause then ionosphere is located between 80 to 400 km okay 80 to 400 km एटा को थर्मोस्फियर भी कहउछंती दिस इज आल्सो ionosphere okay ionosphere why it is called ionosphere it contains electrically charged particles called ions okay so कौन हुए तमरो मेसोस्फियर हम जेन देखिले हाँ मेसोस्फियर ऊपर तमरो ओजोन नहीं ता पर ऊपर लेयर रे जेहेतु तमरो एटमॉस्फेयर एते नहीं डायरेक्ट सनलाइट आछी डायरेक्ट सनलाइट जतबे डायरेक्ट मॉलिक्यूल संगे बाडे हबो इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विथ मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेस द मॉलिक्यूल्स ओके मॉलिक्यूल्स रो तमरो इलेक्ट्रॉन लॉस किछ हे जीवो आयोनाइज हे जीवो ओके ए जो आयोनाइज जे पई हे जीवो तो सेत पई ताकर टेंपरेचर भी बहुत हाई रहइबो ऑलमोस्ट अबाउट 500 डिग्री पी about पळेबो तमरो टेंपरेचर okay of this air okay and again this air is very rarefied माने एते डेंसिटी बहुत कम जस्ट गोटे गोटे पार्टिकल ही थिबे बेसी पार्टिकल नथिबे तो these particles radio interact with radio waves तो जेम देजी radio waves transmitted from earth are reflected back to the earth by this layer okay तो अर्थ एमती लेयर अछि तमर एट गोट रेडियो स्टेशन अछि तो तमर आयोनोस्फियर रे जो आयन मानक संगे रे रिफ्लेक्ट हेकी रेडियो वेव विल travel back okay to far and distant locations okay so that is the ionosphere then exosphere रे तमर बेसिक किछि गैस ही नाही only very light gases like hydrogen helium okay hydrogen helium in that too in very small quantities okay so rarefied gas medium तो exosphere रे इसु रहइबो okay so एगुडा सब थिला तमरो stratosphere mesosphere ionosphere troposphere सब देखिदेले okay now comes to the next question which type of farming is prevalent in south bengal रे को farming prevalent अछि so answer is wet farming so what is wet farming is practiced where there is adequate rainfall okay तो south bengal रे तमरो monsoon climate अछि fertile alluvial soil भी अछि from गंगा डेल्टा okay गंगा डेल्टा भी तुमको गंगा रिवर भी तुमको बहुत adequate water supply भी दउछि okay so एठी हम भी जानि छु तमरो बेंगल रे तमरो paddy jute okay water intensive crops are grown so bengal रे wet farming ही हुए dry farming these are practiced in arid and semi arid areas where the rainfall is low like तमरो millets हो grams हो जोटा कि चना डाली okay एगुडा सब हबो जोथरे कि तमरो जो millets grams जोथरे तमरो arid और semi arid एरिया रे practice करा जाय that is dry farming okay
but please note that dry farming is done in arid and semi arid areas. ତମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇରିଗେସନ କରିଦେଇକି ତମେ ଯଦି ରାଇସ୍ ବି ଗ୍ରୋ କରିବ ସେଟା ତମର ସେଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଯଦି କରିବ ସେଟା ବି ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ଏରିଆରେ ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱେଟ୍ କ୍ରପ୍ସ। ଓକେ, ଯେମିତି ତମର ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆରେ ତମର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେମି ଆରିଡ୍ ଏରିଆ, ସେମି ଆରିଡ୍ ଏରିଆ, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇରିଗେସନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ତମେ ସେଠି ରାଇସ୍ ବି ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ ସେଟା ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ରେ ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ। ଓକେ, ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ର ବିକଜ ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ଇନ୍ ଆରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମି ଆରିଡ୍ ଏରିଆସ୍। ଅଲରାଇଟ୍, ବଟ୍ ତମର ଯଦି ରାଇସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ ୱାଟର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କ୍ରପ୍, ସେଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ କରିପାରିବ, ବେଶୀ ସଷ୍ଟେନେବଲ ନୁହଁ। ଅଲରାଇଟ୍, ସେଟା ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ରେ ହିଁ ଯିବ। ଅଲରାଇଟ୍, ସୋ ଟ୍ରକ୍ ଫାର୍ମିଂ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରକ୍ ଫାର୍ମିଂ? ତମେ ଆମର ପୁଣି OCS 2018 ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭନ୍ ଥ୍ୟୁନେନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମଡେଲ। ଓକେ, ସୋ ଭନ୍ ଥ୍ୟୁନେନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମଡେଲ, ସୋ ସେଥିରେ ତମର ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେଟା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37। ଅଲରାଇଟ୍, ସୋ ଭନ୍ ଥ୍ୟୁନେନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମଡେଲ, ତ ସିଏ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ତମର ସିଟି ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଏଇଟା, ସିଟି ପାଖରେ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିବ ଦିସ୍ ଏରିଆ, ଏଠି ତମର ମାର୍କେଟ ଗାର୍ଡେନିଂ ଅର୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାର୍କେଟ ଗାର୍ଡେନିଂ ଅର୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ? ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ the growth of perishables or perishables. Why? Because like ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ଆଉ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଇକ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହଉ, ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ହଉ କି ମିଲ୍କ ହଉ। ଓକେ, ସୋ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର ପେରି ଅର୍ବାନ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିଥିଲେ 2018ରେ। ତ ଟ୍ରକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ୍ ଭନ୍ ଥ୍ୟୁନେନ୍ ମଡେଲର ଯୋଉ ତମେ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ସେଇଟା, ଅର୍ ପେରି ଅର୍ବାନ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ଓକେ, ପେରି ଅର୍ବାନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ ଯାହା ବି ସେଗୁଡା ତମେ ଫାର୍ମିଂ କରିବ। ଯେମିତି ତମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କି ଏରିଆ। ଓକେ, ବାଙ୍କି ଏରିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପେରି ଅର୍ବାନ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଓକେ, ଟ୍ରକ୍ ଫାର୍ମିଂ perishables deals with perishables so that then it will enable overnight delivery of fresh produce to city centers. Alright, so ଏଇଟା ଗଲା ତମର ଟ୍ରକ୍ ଫାର୍ମିଂ ତ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଲାଡାଙ୍ଗ ଫାର୍ମିଂ। What is ladang farming? Ladang farming is a name for shifting cultivation. Shifting cultivation or slash or burn agriculture ତମେ ଜାଣିଥିବ। Okay, ladang farming is that, but ladang, it is the name of shifting agriculture in Java and Indonesia area. Okay, ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇଛି ଫଟୋ, ତମେ ମେ ବି ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ତମେ ମେ ବି ଏଟା ତମେ ଦେଖିଦେବା କଥା। ତ ଭିଏତନାମରେ ଯେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ରେ କୁହାଯାଏ, ମାଡାଗାସ୍କାରରେ ଟାବି, କଙ୍ଗୋରେ ମାସୋଲ, ଓକେ, ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ଲୋଗାନ, ମେକ୍ସିକୋରେ କୋମିଲ୍। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମିଲ୍ପା ଆଉ ମିଲିଆ, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିପାରେ। ମିଲ୍ପା ଇଜ୍ ୟୁକାଟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୌତିମାଲା, ମିଲିଆ ଇଜ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା। ଓକେ, ୟାର ଲୋକେସନ, ଓକେ, ୟା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଅଛି। ୟୁକାଟାନ୍ ପେନିନସୁଲା, ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଗୌତିମାଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ। ତ ମେକ୍ସିକୋର ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ୟୁକାଟାନ୍ ପେନିନସୁଲା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁକାଟାନ୍ ଆଉ ଗୌତିମାଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଲ୍ପା କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ମେକ୍ସିକୋ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ ମିଲିଆ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସିମିଲାର ସାଉଣ୍ଡିଂ ଟର୍ମସ୍, ସୋ ଏଟା ଟିକେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବ। ଏକାଲିନ୍ ହଉଛି Guadeloupe is an island in the Caribbean islands, is one of the Caribbean islands. All right, Conuco, Venezuela, Roca in Brazil, Chetemini in Uganda, Zambia, Zimbabwe, Kenjin, এটা ଟିକେ ইম্পর্টান্ট, এটা মনে রাখিও, ফিলিপিন্স। ওকে, মিয়ানমারে টঙ্গিয়া, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚେନା। ଓକେ, ଲଡାଙ୍ଗ ତ ପଚାରିଛି। ତାମ୍ରା ଇନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହୁମା ଇନ୍ ଏଗେନ୍ ଜାଭା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଓକେ, ଲଡାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହୁମା ଏ ଦିଟା ଜାଭା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହୁଏ। ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିଦେବ ଏଇ ମିଲ୍ପା ଆଉ ମିଲିଆ, ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇପାରେ। ରୋକା ଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲ, ଓକେ, ମାସୋଲ ଇନ୍ କଙ୍ଗୋ, ରେ ଇନ୍ ଭିଏତନାମ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ, ବାକି ସବୁ ତ ଦେଖିଦେବ, ବସ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇଲି ସେଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବ। ଓକେ, ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ରାଇଟ୍, ସେମିତି ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା କି ଝୁମ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଭେୱାର ଅର୍ ଦହିୟାର। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଦହିୟାର କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦହିୟା ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦହିୟାର। ବୁଣ୍ଡେଲଖଣ୍ଡ ରିଜନ ଏମପି, ଦୀପା ଇନ୍ ବସ୍ତର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମପି। ଓକେ, ସରି ବସ୍ତର ଏଟା ଏମପି ନୁହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ହିଁ। ଓକେ, ଜାରା ଆଣ୍ଡ ଏରକା,
साउदर्न स्टेट्स रे बात्रा और वाट्रा भी कहा जाए ओके इन राजस्थान पोडू इन आंध्र प्रदेश कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला ओके देन तमरो ओडिसा रे कॉमन भिंगा धाबी ओके भिंगा इज आल्सो कॉल्ड ब्रिंगा सेम थिंग ब्रिंगा ओके सो ओडिसा रे এই ସବୁ ନାଁ ଅଛି ତମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦବ ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ତମର ଏଇ ଯୋଉଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଶିଆଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ବଟ୍ ବିକଜ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିଦବ ଆଉ ଓକେ ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 36 now comes question 37 which of the following is the greatest shipping canal of the world okay so it greatest is a vector okay greatest but ତମେ ଯଦି तब जदि टिके पेरिफेराल नॉलेज यूज करिवो यू कैन अराइव एट सुएज कैनाल ओके तो विल सी सो पानामा कैनाल वाज done okay done to reduce the distance from Atlantic Ocean to Pacific Ocean okay especially Panama Canal caters to America okay North America सो देख तुम जदि ए बाटे पानामा कैनाल न था तो तुम एते बाट जाइथा तुम यही बाट जाइथा अबाउट 20,900 किलोमीटर जिते पानामा थ्रू जीव तुम 8,300 किलोमीटर ओके केते डिस्टेंस रिड्यूस हो जाउछ ऑलराइट तो ऑलमोस्ट तुम 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस कमी जाउछ अगेन तुम जदि एई बाट जाइकी एई बाटे जीव तो हियर कम्स अ चैलेंज ओके तुम साउथ अमेरिका देखो तुम साउथ अमेरिका एपटे पैसिफिक ओशन अच्छी एपटे आटलांटिक ओशन अच्छी तुम साउथ अमेरिका आउ अंटार्कटिक भितर गोटे गैप अच्छी दिस गैप इज क्वाइट ट्रेचरस ओके तो तुम जमी देख तुम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तुम जब बर्नौली थ्योरम जब पढ़ी तुम जमी ओके सो छाड़ तुम जब पाइप अच्छी पाइप तुम जो जाड़ जब पाइप एज टाक तुम जब चिपिकी धर तो वाटर जोर फ्लो करके बाहर कर ओके दैट इज बर्नौली थ्योरम ओके जदि पाइप एज टाक तुम जब चिपिकी धर तुम वाटर फ्लो विल इंक्रीज इन वेलोसिटी सिमिलारली यही जगह देख वाटर फ्लो जब आसूची तो यही जगह तुम एरिया कमी जाऊँच एरिया जब कमी जाऊँच तुम वेलोसिटी बढ़ीज ओके वेलोसिटी जब बढ़ीज यही जगह सब बेले तुम समुद्र पूरा माने अशांत रुहे ऑलराइट that is the feature of this area that is ए एरिया को तुम ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाए ड्रेक्स पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन स्ट्रेट ऑफ मैगेलन ओके सो इट इज अगेन यही जो जगहटा तुम साउथ अमेरिकार दिस इज केप हॉर्न ओके तो यही जगहटा बहुत केप हॉर्न यही जगहटा बहुत डिस्टर्ब रुहे तो अगेन इट इज ए चैलेंज एज आई हैव सेड इट इज ए चैलेंज टू पास थ्रू यही जगह आसिकी ए बाटे होगी जीवा एटा गोटे चैलेंज ओके तो यही सब जिनस को अवॉइड करिया पई तमरो पानामा कैनाल तैयारी हेतला ओके सो पानामा कैनाल देखला पर तुम जस्ट एटा तुम जानिथिबो इस्थमस और स्ट्रेट भितर खाली डिफरेंसटा देखि दियो isthmus and strait isthmus is the a small narrow land body that separates two large water bodies okay जेमती suppose okay एटा गोटे बड़ लैंड अच्छी this is also a land okay this is narrow land okay this is the isthmus तमर एठी वाटर रहिला तमर एठी water रहिला all right so narrow land separating two big water bodies again narrow land connecting two big land masses that is isthmus strait hoji it is a narrow water body that joins two water bodies okay जेमति तमरो एटा गोटे बड़ लैंड अच्छी एटा गोटे लैंड अच्छी तमरो एठी गोटे बड़ वाटर बॉडी अच्छी एपटे गोटे बड़ वाटर बॉडी अच्छी okay this area is called strait so narrow water body connecting two big water bodies like तमरो जेमति हमर इंडिया श्रीलंका भितर पाक स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट जेमति तमरो बेरिंग स्ट्रेट अच्छी आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करछि तमरो गिब्राल्टर स्ट्रेट तमरो Atlantic Ocean और Mediterranean Ocean को सेपरेट करछि बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका ओके सो इस्थमस और स्ट्रेट जमे जानला सो तो देखिलो तुम ए जो
এই যে ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗେଲାନ୍। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗେଲାନ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା ଏପଟେ ସପୋଜ ତମ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଏପଟେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି divides the two oceans, that is Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Okay, ସେମିତି ତମର isthmus connect କରୁଛି ଦୁଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସେସ୍ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକା। ଓକେ, ତ isthmus ଅଫ୍ ପାନାମା କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଗ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେଇଥିଲା? ଓକେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ ତମର ଏଇ ପାଇବ ଏଇ ଜାଗାଟା ପାନାମା ସିଟି ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ ତମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁକାଟାନ୍, ଏଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଡ୍, ୟୁକାଟାନ୍ ପେନିନସୁଲା ମେକ୍ସିକୋ। ଏବେ ରହିଲା ଗତିମାଲା, ବେଲିଜ୍, ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର, ହଣ୍ଡୁରାସ୍, ନିକାରାଗୁଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, ପାନାମା, then comes Colombia. Okay, so these countries are the Central American countries. तो तमरो एठी रहला तमरो कैरिबियन सी, एठी तमरो पैसिफिक। ओके, दीटा वाटर बॉडी एठी तमरो नारोएस्ट पॉइंट बिटवीन दिस टू माने खोजा गला को जगह रे सबटु कम डिगिंग रे करा ही पारिबो। ओके, टू फैसिलिटेट ट्रैवल। तो पानामा कंट्री रे ही पानामा सिटी पानामा कंट्री रे ही ए इस्थमस ऑफ पानामा Isthmus of Panama dig karagala to connect to avoid the Drake's passage. Okay, so Caribbean Sea, Pacific Ocean, okay, ताकू connect करछि Isthmus of Panama. Alright, so Panama जेहेतु आमे जानले एटा खाली अमेरिका ପାଇଁ ହିଁ करा ହେଇछि, तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट नहि थाई पारे। सू कैनाल, ओके, सू कैनाल देखि दवा। ओके, तो तमे जानछ ग्रेट 5 लेक्स जो अछि तमरो कनाडा, दिस इज एटा होछि तमरो बॉर्डर बिटवीन Canada and the USA, Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and this is Lake Ontario. Okay, ये जो पांचटा लेक अछि, Lake Superior आउ Lake Huron को कनेक्ट करिया पई सू कैनाल और सू लॉक्स तयारी कराइछि। ओके, सू लॉक्स सेमती एटा तयारी कराइछि और दिस कैनाल has been built to connect Lake Superior and Lake Huron. Right, एटा गला सू कैनाल, देन कम्स सुएज कैनाल। ओके, सुएज कैनाल तमे जानि थिबो, सुएज कैनाल कैन आल्सो बी कॉल्ड द इस्थमस ऑफ सुएज। ओके, इस्थमस ऑफ सुएज बिकॉज अगेन इस्थमस कोन पई स्मॉल एटा गोटे फर्स्ट स्मॉल लैंड बॉडी थिला दैट कनेक्ट्स द सिनाई पेनिनसुला विथ इजिप्ट। ओके, सिनाई पेनिनसुला इज आल्सो पार्ट ऑफ इजिप्ट, बट एटा होची या थ्रू कनेक्ट करा गला टू कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। दिस इस्थमस ऑफ सुएज was made, okay, to connect Mediterranean Sea and Red Sea, so that ei route टाको अवॉइड करा hay परिबो। ओके, अगेन तमरो यूरोप रु तमरो चाइना जति जीवो, अगेन तमे जानो तम भाबुथबो जदि एपटे काई न पळेले अमेरिका तो इठी अछि, तो इठी काई न पळे, बिकॉज लैंड ट्रैवल इज मोर कॉस्टली देन सी ट्रैवल। ओके, तो सी ट्रैवल कम कॉस्ट पड़ियो बोली तमे एठू लैंड ट्रैवल को अवॉइड कर ही तमर कॉस्ट कमिबो। ओके, सो सेंती तमरो यूरोप रे तम भाबतो एठू एठी काई डायरेक्ट तमरो कनेक्ट कर दलनी। ओके, बट बिकॉज सी ट्रैवल इज कंपैरेटिवली चीपर। ओके, सुएज कैनाल कम पाई करा हला इट टू कनेक्ट यूरोप एंड द फार ईस्ट, दैट इज चाइना। ओके, चाइना रा पोर्ट हो स्ट्रेट ऑफ मालाका देकी, तो सुएज कैनाल जदि न थांता ताहले तमर सुएज कैनाल जदि न थांता 27,000 किलोमीटर खंडे जाई थांतो। जदि सुएज कैनाल reduces the travel time by 7,000 kilometer. Alright, so सुएज कैनाल तमे जदि तम हिस्ट्री रे पढिथिबो 1956 रे गोटे सुएज क्राइसिस हेइतला। सुएज क्राइसिस व्हेन इजिप्ट नेशनलाइज द सुएज कैनाल बिल्ड करा गला, तापर ताकू मैनेज करथुले गोटे कंपनी, से कंपनी रे ब्रिटेन और फ्रांस रो बहुत गोटे स्टेक थेला। ओके, Britain and France were the highest stakeholders when Egypt nationalized the Suez Company in 1956. So Britain, France, and Israel, they militarily intervened. Okay, they militarily intervened in Egypt, but UN came into force. UN peacekeepers were deployed, and by US intervention, UK, France, and Israel were forced to withdraw. Okay, this showed the declining influence of European powers and the rise of USA and USSR as major powers. Okay, so that's why Suez Canal importance एते जे समस्त इन्वॉल्व भागु पड़ला। ओके, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट शिपिंग कैनाल। अगेन तमरो
again बहुत गुडे कंट्री स्टेक होल्डर अछंती एई रूट रे ओके बिकॉज एटा बहुत गुडे कंट्री को बहुत गुडे कंट्री ही कनेक्ट करूची तमरो इंडिया हो तमरो सिंगापुर एशियन कंट्रीज हो चाइना हो ओके सो this Suez Canal becomes the greatest canal okay then comes the coal canal ऊपर मुझे सेमती देखि पाइलिनी बट कोल कैनाल गोटा अछि तमरो कुट्टे कोल ओके एटा होछि तमरो श्रीनगर रे अछि सो अगेन ए जो मार्क्ड इन ऑरेंज ओके दिस कैनाल एटा तमरो झेलम रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर एई तापर झेलम रिवर को लिंक करिया पई गोटा कुट्टे कोल कैनाल खोला हितला ओके सो व्हाई वाज इट डन टू reduce reduce the regular floods in Jhelum and carry food grains throughout the city. Okay, and it is a navigational canal flowing through Srinagar. But ebe eoda bahut encroachment hei galani. But the government is planning to remove encroachment and rejuvenate this canal again. Okay, so maybe it has coal canal jo deji that refers to the Kutte coal canal. Otherwise, सेटा क्रा canal ହେଇଥିବ. Okay, so OPSC एमते spelling mistake करिया कथा नो. Kra canal this goes through Thailand. Okay, this canal is being made by China to avoid the Strait of Malacca. Okay, Strait of Malacca is a choke point. Strait of Malacca is a choke point for China. So 80 तम से China Strait of Malacca को avoid करिया पई 80 China तमरो Kra canal तैयारी करछि. Okay, in Thailand. Alright. So okay. So next comes question 38. Which of the following pairs is not correctly matched? Not correctly matched. So Johannesburg coal mining, Magnitogorsk iron and steel, Detroit automobiles and Birmingham shipbuilding. Okay, so option 38 is D. D is the answer. Birmingham shipbuilding. Okay, so Johannesburg, it is a city in South Africa. Okay, South Africa तमे देखियो दीटा landlocked countries असंती लेसोथो ଆଉ एस्वातिनी. Okay, these are landlocked countries within South Africa. All right. So Johannesburg is also called the city of gold. City of gold because Johannesburg is a gold discover kara that attracted huge investment and capital. Okay, that led to the rapid development of Johannesburg. All right. So Johannesburg is associated with gold mining. Magnitogorsk. Okay, Magnitogorsk is in Russia. So Magnitogorsk is in western Russia on banks of the Ural River, found in 1929 to exploit rich magnetite iron ore of Mount Magnitnaya. Okay, Mount Magnitnaya. So it has iron and steel works. Several times it has been enlarged and one of the world's largest in 1975. Okay, steel production capacity. So this is a Magnitogorsk is an industrial city with iron and steel works. Okay, so iron and steel, Magnitogorsk, correct. Detroit associated with automobiles. So yes, Detroit tomorrow. Okay, so eta tomorrow Magnitogorsk. Okay, this is the location of Magnitogorsk in Western Russia. All right. So next comes the Detroit. Oh, sorry. Okay, Detroit location तमे देखि दियो. Detroit तमे जे देखला लेक हॉर्न, लेक एरी एई जगह रे Detroit अछि in near Michigan. Okay, Detroit is also called the motor city. Okay, motor city Detroit. This is the birthplace of American automobile industry. Okay, it is called motor city because three big companies, the big three, जो big three जोटा कहउछंती, big three companies, that is General Motors, GM, Ford and Chrysler. तार एबे ना हेची Stellantis. Okay, एई तीनटा को डेट्रॉइट रे ही बर्थप्लेस ताकर. Okay, General Motors, Ford and Stellantis. Okay, then Birmingham is associated with shipbuilding, but that is not true. Birmingham is the birthplace of Industrial Revolution. So Industrial Revolution, the birthplace. So that's why Birmingham is also called the workshop of the world.
वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बर्मिंघम ओके एबे भी तार ना हो सिटी ऑफ 1001 डिफरेंट ट्रेड्स all right city of 1001 different trades workshop of the world birmingham okay birmingham रो तमे लोकेशन देखो सी बिल्डिंग जति देछि तमे जति लोकेशन भी जानिथिबो एटा ब्रिटेन भीतर देछि जदि सी बिल्डिंग हेतांता ताल सी कोड कोस्ट पाखरे माने समुद्र पाखरे एक्सेस देतांता बट इट इज इन इनसाइड द कंट्री सो birmingham is not the answer okay so सेटा ही रॉन्ग ऑप्शन थिला तो okay so this was the answer okay जदि सी बिल्डिंग तमे कहिबो तमरो ब्रिटेन रे सुंदरलैंड गोटे जगह अच्छी दिस इज सुंदरलैंड एंड ब्रिटेन रे ग्लासगो गोटे जगह अच्छी ओके ग्लासगो एंड सुंदरलैंड दीज आर एसोसिएटेड विथ शिप बिल्डिंग इन ब्रिटेन ऑलराइट सो शिप बिल्डिंग बर्मिंघम नो शिप बिल्डिंग एसोसिएटेड विथ ग्लासगो एंड सुंदरलैंड now which of the following pairs is not correctly matched Boston of East Ahmedabad, capital of cotton textiles, Mumbai, Manchester of India is Agra, electronic city, Bangalore. So, which of the following is not correctly matched? Pacharji, Manchester of India, Agra. That is the answer. Okay. तमे जदि भी just common sense टिक भी लगेबो तो ये जो naming of cities जो करा है सब okay so these are the naming of industrial revolution times okay industrial revolution times or colonial times okay colonial times तमे अहमदाबाद सूरत एगुड़ा सब तुम कोस्टाल लोकेशन अच्छी ओके मुंबई इज ऑल्सो कोस्टाल लोकेशन तो ब्रिटिश माने प्राय कोस्टाल लोकेशन रे ही ट्रेड करूथले ब्रिटिश आरे सी पावर ओके ब्रिटेन वाज सी पावर कोस्टाल लोकेशन रे ही जमाने बेसी ट्रेड करूथले ओके इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर तमे तो जानी थिबो एटा एबे तबर आईटी हब होची बैंगलोर तो डेफिनेटली बैंगलोर जानी थिबो आग्रा तमे जदी आग्रा लोकेशन एज यू ऑल नो इट इज इन यूपी ओके यूपी नियर मथुरा ओके आग्रा तो इट इज इनसाइड द कंट्री नॉट ए बोट लोकेशन आग्रा रे सेमती किसी रॉ मटेरियल सोर्स भी नाही ओके तो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संगे आग्रा रो सेमती किसी नाही रिलेशन आग्रा इज एसोसिएटेड मोस्टली विथ टूरिज्म ओके तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आग्रा ही नथिबो तो ऑप्शन सी तुम जदी कॉमन सेंस रे भी ये आंसर को अराइव कर परिबो ओके सो बॉस्टन ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद ओके तो टिके लोकेशन देखि दवा देखो तुम अहमदाबाद आउ सूरत ओके एटा तुम कोस्टल लोकेशन पाखे ही अच्छी ओके एटा जस्ट टिके दूर अच्छी बट एगेन कोस्ट पाखे एक्सेस अच्छी सूरत रो भी कोस्ट पाखे कोस्ट एरिया पाखे एक्सेस अच्छी ओके ओके सो सो यही जिनस एमती टाइप क्वेश्चन तुम ओसीएस 2017 रे गोटे एमती पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज which of this is famous for cotton textile industry okay Lancashire Newcastle Sheffield और Durham okay so मुंबई को तुम को लैंकाशायर ऑफ इंडिया कहला ओके लैंकाशायर फर्स्ट प्लेस वेयर स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन वाज डन इट वाज द हब ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स न्यूकासल होम ऑफ लोकोमोटिव्स फर्स्ट रेलवे एंड शिप बिल्डिंग शेफील्ड हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील एंड डरहाम कार्पेट एंड फैब्रिक ओके लोकेशन भी तुमको दे देछि एठी सो दिस इज लैंकाशायर Newcastle is here then Sheffield is here then your Durham is here and Manchester is here okay so जदि तुम ओसीएस 2017 को भी टिके एनालाइज करथा तुम 2019 रे भी तुम आसी परिबो ए क्वेश्चन को कर परिबो जे कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मुंबई ओके मुंबई इज कॉल्ड द लैंकाशायर ऑफ इंडिया ओके सो कॉटन टेक्सटाइल्स आउ रिलेटेड कॉटन टेक्सटाइल्स ही लैंकाशायर रो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स थला तो मुंबई एटा होची करेक्ट आंसर ओके सो पीवाईक्यू रो टिके पीवाईक्यू रो रिलेशन अछि तमन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मान कर ओके सो बोस्टन ऑफ ईस्ट तमरो बोस्टन रो लोकेशन देखो बोस्टन लोकेटेड इन कोस्टल एरिया यूएसए ओके एटा लेक ओंटारियो हम देखिलु एबे सो इट इज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया तमे बोस्टन रे भी पढ़थिबो तमे जेंती इट इज ए मेजर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सेंटर ओके बोस्टन इज ए मेजर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सेंटर सिमिलरली Ahmedabad is also emerging a major economic and commercial center of India similar to Boston that's why it is called Boston of the East Ahmedabad okay
कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई एटा से टाइम रे थिला ओके एटा भी ट्रू हम जेम देखले लंकासायर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मुंबई इट इज एसोसिएटेड विथ कॉटन टेक्सटाइल्स बट देखो एई जिनसटा कॉटन टेक्सटाइल दैट इज एसोसिएटेड विथ इंडिया ओके मुंबई दिस इज ट्रू बट देखो गोटे जिनस तमरो जेहेतु देखो अहमदाबाद और सूरत लोकेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारण कौन तुम ये प्लेन एरिया अच्छी तुम गोटे सपोज गोटे सिटी डेवलप करिया स्टार्ट कला से एक्सपांड करने एरिया अच्छी चारिआडू एरिया अच्छी सेमती सूरत भी जब एक्सपांड कला तार एपटे एपटे तो हाँ पोर्ट लोकेशन अच्छी ठीक अच्छी बट से चाहिए याडू भी एक्सपांड कर बट मुंबई कौन है तुम तुम ये तुम मुंबई रे कौन है तुम दिस इज मुंबई एट तुम वेस्टर्न घाट्स अच्छी ओके एबे जदि so just a second I think is my audio audible you can just write in the chat just disconnect है कि connect हला तो तरह ओके सो हाँ तो एक्सपांशन ऊपर कहूଥିଲି तो दिस इज दी वेस्टर्न घाट्स ओके वेस्टर्न घाट्स तमर एटा रहला मुंबई ओके एबे याको पोर्ट पाखरे लोकेशन अच्छी बट ये जब एक्सपांड करिया चाहिए सी एक्सपांड करि परिबो नाही ओके तो इनिशियली तमरो कॉटन कैपिटल थिला लंकासायर थिला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पई बट धीरे धीरे मुंबई बिकेम फाइनेंशियल कैपिटल ओके जेहेतु को एक्सपांड करिया जगह नाही तो तमे एटा पढिथिबो कि तमरो एनसीईआरटी रे मुंबई को सेंट्रल सेंट्रल इंडिया संगे लोकेट करिया पई तार पाथ भी नाही जेमति तमरो थाल घाट ओके थाल घाट एंड बोर घाट ओके Borghat. Okay, Thalghat connects Mumbai to Nasik and Borghat connects Mumbai to Pune. Okay, so Western Ghat पूरा कट्टा ହେଇଛି path. Okay, passes. Natural pass ଅଛି but ସେଥିରେ road ତିଆରି କରାଯାଇଛି. Okay, so Mumbai को ଯେହେତु expand କରିବାକୁ scope ନାହିଁ ତ ଏଇ industry ମାନଙ୍କର they relocated to north that is Gujarat ଯୋଉଟା କି ସୁରଟ ଅହମଦାବାଦ ଏସବୁ. Okay, so ଏଠି କଣ ହବ ଅହମଦାବାଦ ଆଉ ସୁରଟରେ expand କରିବାକୁ ତମର city spread କରିବାକୁ ତମର scope ଅଛି. ଏଇ ସିମିଲାର କେସ୍ ଯେମିତି ଆମର କଟକ ସହର କଟକ ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ମହାନଦୀ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସେପଟେ ସ୍କୋପ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଆଡକୁ ସିଆଡୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସ୍କୋପ ଅଛି ଓକେ ସୋ ବିକଜ ଅଫ ଦି କଞ୍ଜେସନ ଇନ ମୁମ୍ବାଇ ଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଦେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଟୁ ସୁରଟ ଆଣ୍ଡ ଅହମଦାବାଦ ଅଲରାଇଟ୍ ସୋ ओके सो कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एटा colonial times रे मुंबई थिला मुंबई इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज एटी फाइनेंशियल बेसी ये होची सेठी एबे ता देरे मैन्युफैक्चरिंग कम अछि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अगेन रिलोकेटेड टू अहमदाबाद एंड सूरत ओके सो मैनचेस्टर जति तमरा कम जति ओके तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तुम्हारे जदि एटा होची आगरा देजी एटा होची तुम्हारा ऑप्शन भूल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ अहमदाबाद ऑलराइट इज एसोसिएटेड विथ अहमदाबाद बोस्टन ऑफ द ईस्ट भी अहमदाबाद तुम्हारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी अहमदाबाद ओके सो मैनचेस्टर Manchester was the pioneer in industrial revolution and it was the known for global cotton production. Okay, so it was called the Cottonopolis. Okay, Cottonopolis or the warehouse city. Okay, Cottonopolis or warehouse city. Manchester को इटा कहउतला. Okay, so again electronic city Bangalore तुम जानिছো. Okay, so एटा थिला. This is all about this question. Now comes the question number 40. Which of the following Indian states are the greatest number of sugar mills? Okay, तो आमे OCS 2018 रे question number just a second. Okay, so देखो तमर OCS 2018 रे question number 33 location of sugar industry is moving from North India to South India because
ओके तो आम देखी ओके यूपी एरिया वाइज 45% sugar cane cultivate कराउछि ओके 45% this is rank 1 okay state wise production of sugar cane रे भी UP is the top Maharashtra is the second तमरो UP gives 44% okay then comes the state wise yield of sugar cane yield जदि देखिबो Tamil Nadu is the highest okay तो एटा हम देखितला sugar cane ऊपर previous year question देइतला question number 33 okay तो question number 40 पचारछि which of the following Indian states has the greatest number of sugar mills okay sugar mills जदि greatest number पचारछि ताहले महाराष्ट्र ही हबो okay Maharashtra is the answer because see UP is called the sugar bowl of India UP is called the sugar bowl of India, but Maharashtra re number of mills are emerging. Okay, so because why UP is the top producer of sugarcane despite देखो तमे production देखिबो UP is 44% production दोछ. Okay, so UP is the top producer of sugarcane despite having lower mills because एटा तांकर बहुत आगरु करि दिया हेछि. एबे जेन तमे क्वेश्चन देखिलो is moving from north to south moving from North India to South India okay এটা ଏବେ just phenomena ଚାଲିଛି but UP ରେ already sugarcane mill ମାନେ already established ଅଛନ୍ତି so that's why number of mills କମ but production ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକା UP ର okay but Maharashtra has highest number of mills okay greatest number of sugarcane mills okay so एमती तुम क्वेश्चन प्रिपेयर कर ओके सुगर केन ऊपर तो जदि पचारछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमर सुगर केन ऊपर तुमर टिके देखि देबो प्रोडक्शन वाइज एरिया वाइज तुमर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ सुगर केन ओके आ जदि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सुगर केन जदि पचारछि तुमर महाराष्ट्र भी तुम अपडेट कर दबो तुम नोट्स रे दैट महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुगर केन मिल्स ओके नाउ कम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स Sivasamudram hydel project is located at okay so answer is Kaveri Sivasamudram hydel project ठीक है देखि दवा okay so this is the Sivasamudram falls it is located in Karnataka state okay एटा तमर जो border देइची this is the border between Tamil Nadu and Karnataka Tamil Nadu and Karnataka okay 8 रहला तमर Sivasamudram falls this is on the Kaveri river okay Kaveri river Sivasamudram falls this Sivasamudram falls okay the Sivasamudram hydroelectric power plant was set up in 1905 on the Kaveri river initially it was meant to supply power to the Kolar goldfields and Kolar goldfields but after the expansion of Bengaluru as a city so it was expanded to supply power to Bangalore city okay तो शिवसमुद्रम फॉल्स जेतु देइजी ता ऊपर टिके देखि दबो तमरो ओके कावेरी रिवर देइजी तो दिस एटा होजी शिवसमुद्र फॉल्स तो एठी दीटा एक्स्ट्रा फॉल अछि गगन चुक्की फॉल्स आ गोटे भरचुक्की फॉल्स ओके गगन चुक्की और भरचुक्की फॉल्स दीस आर वाटरफॉल्स नियर दी शिवसमुद्रम फॉल्स ओके शिवसमुद्रम फॉल्स तमरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एटी कोडी अछि ओके so this is all about the Sivasamudra falls on Kaveri river again the jeep and car manufacturing company okay so एटा किछि पचारियार किछि माने नाही बट जेतु पचारछि मुंबई अगेन ओके तो जदि तमरो देखि दबो टिके हमर टोटल जो माने ओ ऑटोमोबाइल सेक्टर हमर जति सपोज महिंद्रा रा जदि हेडक्वार्टर इट इज इन मुंबई सिमिलरली टाटा रा हेडक्वार्टर भी मुंबई टाटा जेमति टाटा पी कार मैन्युफैक्चरिंग करूची तमर मारुति सुजुकी कार हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली ओके मारुति सुजुकी रा हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली बट प्लीज नोट दैट मारुति सुजुकी रो स्टार्ट हेतला गुरुग्राम रु ओके गुरुग्राम रु तार प्लांट स्टार्ट हेतला बट एबे तांगर हेडक्वार्टर शिफ्ट हेचंदी न्यू दिल्ली को एठी देखो मते लागुची एई ऑप्शन टा होची गुरुग्राम ओके गुड़गावन एमती किछि नाही मु देखिली गुड़गावन बोले किछि जगह ही नाही गुरुग्राम को एटा स्पेलिंग भूल करछि यूपीएससी ओके सो मारुति रो हेडक्वार्टर गुड इज इन गुरुग्राम हीरो मोटर्स रो जिम तम न्यू दिल्ली तांकर होंडा रो जिमती तमरा हेडक्वार्टर्स इज इन नोएडा ओके यूपी बट होंडा इज अ जापानीज कंपनी इट्स हेडक्वार्टर इन टोक्यो बट ओके सो এই जो दिन सोडा এটা बस्ट बट आई डोंट थिंक এটা कहीं पचारछि बट जस्ट इन गोट रैंडम पचार दिछि ओके no need to worry about that so India borrowed the DPSP from the constitution of
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एटा तुम जानि जे एतर किछि कहिबार ही नाही रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डीपीएसपी फ्रॉम आर्टिकल 36 रु 51 ओके एति जानिबो it was borrowed from Ireland again तुम लक्ष्मीकांत रे देछि Ireland had borrowed the idea of DPSP from the Spanish constitution all right so next question which of the following is not a fundamental right anymore okay so right to property ऊपर टिके देखि दबा okay so right to property originally it was one of the 7 fundamental rights under part 3 जोटा कि dealt with article 19(1)(f) and article 31 okay 19(1)(f) रे every citizen had right to acquire hold and dispose property article 31 कहउतला जे every citizen right against deprivation of property okay that no person can be deprived of property except by authority of law all right so एटा तमरो article 31 और article 19 देइथिले but after the commencement of constitution बहुत गुटे केस हला पर ई राइट टू प्रॉपर्टी पई बहुत गुटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हेतला फर्स्ट 4 7.5 ओके 39 40 बहुत गुटे अमेंडमेंट हेतला तो इट वाज डिसाइडेड दैट एते सब चैलेंज हला पर राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रे अबॉलिश कर दिया हला फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स article 19(1)(f) and article 31 was repealed from part 3 instead 44th amendment act a new article that is 300A was inserted in part 12 under heading right to property okay so here the lekhala no person shall be deprived of property except by authority of law thus right to property still remains a legal right or a constitutional right okay though it is no longer a fundamental right okay so again it is also not a part of basic structure of constitution okay so eta tom lakshmikant ra achi this is everything you need to know about right to property okay so sorry okay so right to constitutional remedies article 32 right to move throughout the country right to assemble peacefully article 19 okay so these are all fundamental rights the not is fundamental right which part of constitution welfare state find elaboration okay welfare state it is found in directive principle DPSP okay so fundamental right preamble is the basic is the basic values for which constitution stands for okay fundamental rights mostly deal with civil and political rights then comes the then comes the DPSP that is part 4 these are the DPSP give socio-economic rights to citizens okay so this is quite logical okay तो सबुठी भी तुम देखो फर्स्ट सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कौन पे दिया जीवो बिकॉज़ फर्स्ट जदी स्टेट तैयारी हे गला एबे समस्त की इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया हला तो सिविल गोटे सिविलाइज्ड सोसाइटी पई सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स समस्त की दिया हे गला तापरे वल्नरेबल सेक्शन मानो पई कोन करा जीवो सेटा परे आसीबो ओके तो फर्स्ट तुमको समस्त की फंडामेंटल राइट्स दे दिया हला तापरे वल्नरेबल सेक्शन की welfare state is aimed at the vulnerable section of society all right okay again to welfare state idea is found in DPSP that comes after the civil and political rights in the socio-economic rights okay so so question 45 then comes the question 46 right to freedom of religion okay एटा किछि कहबार नै ओके आंसर इज सी freedom of religion 25 ରୁ 28 guaranteed under 28 fundamental rights is in part 3 एतरे किछि कहबार नै question 48 Gandhian principles have been enumerated in DPSP again एटा तमरो लक्ष्मीकांत रे elaboration करा हिची socialist DPSP categorize करा हिची as socialist Gandhian or liberal intellectual okay so Gandhian रे जेंति तमरो village पंचायत so article 40 or cottage industries or promotion of cottage industries or management and functioning of cooperative industries okay so these are all Gandhian principles okay that is in DPSP okay now comes question 49 which of the following sets of bills is presented to parliament along with the budget okay along with the budget तो ऑप्शन टिके देखि दबो देखो ए जो दुईटा ऑप्शन होउजी C और D okay so these are similar sounding options okay similar sounding options को पई देखो एतरे तीनटा वर्ड सेम अछि फाइनेंस बिल एंड okay
तो अलगा दुटा ऑप्शन गुड़ाक देखियो सेमती किसी रिलेशन नहीं सी आउ डी भितर जदि देख सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन जदि अच्छी जदि किसी माने सपोज तीनटा कि तीनटा रु अधिका वर्ड जदि मैच करूची एटलिस्ट 3 ओके एटलिस्ट 3 वर्ड्स ओके जदि मैच करूची देन तमे जानिबो एग्जामिनर एई दुटा भितरु ही कहा गोटे ऑप्शन करबा को प्लान करिछि ओके तो एई दुटा भितरु गोटे ठीक गोटे भूल ओके तो दीज आर सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस ओके सो अगेन गोटे देखिबो जिंस जेमि तमरो क्वेश्चन नंबर 50 अछि जदि ऑप्शन खाली देखिबो ग्राम पंचायत ग्राम सभा ए आउ डी दिस इज नॉट सिमिलर साउंडिंग बिकॉज खाली ग्राम गोटे वर्ड सेम अछि so these are not similar sounding at least I'm saying it again at least 3 words or more जदि 3 words or more जदि same थिबो then the options are similar sounding then आई सेही ऑप्शन भितर गोटे ठीक थिबो गोटे भूल थिबो जोटा कि एग्जामिनर करिछि ओके मॉडिफाई करिछि ओके सो सी आउ डी भितर कोटा गोटे आंसर हबो तो कोटा हम देखि दबा बजट ऊपर ओके सो यूनियन बजट गोटे जिनस मन रखिबो यूनियन बजट रे 14टा डॉक्यूमेंट सबमिट करा जाय टू पार्लियामेंट ओके बजट डॉक्यूमेंट्स रे 14टा डॉक्यूमेंट दिया जाय टू द पार्लियामेंट ओके सो व्हाट आर द what are those finance minister's budget speech annual financial statement this is the budget okay this is under article 112 okay 112 then demand for grants that is under article 113 then comes the finance bill okay then comes the statements mandated under FRBM act fiscal responsibility and budget management okay तापर जो छोट छोट दिन expenditure budget receipt budget okay expenditure profile budget at a glance ओके की फीचर्स ये सब मिसी की 14टा दिन बजेट रे प्रिपेयर करा जाए पार्लियामेंट रे ओके पार्लियामेंट को ऊपर को प्रेजेंट करा जाए एज बजेट डॉक्यूमेंट्स ओके सो लिखा है डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर बीसीडी ओके बीसीडी आर मैंडेटेड बाय आर्टिकल 112 113 and 1110 okay this is finance bill 1110 deals with money bills okay of the constitution of India respectively okay and serial number EAB जोटा कि E A और B these are presented according to FRBM act okay ओके अगेन गोटे आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क गोटे आसे ए जो ऑप्शन नंबर के रे अछि आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क दिस हैज क्लियरली डिफाइंड आउटपुट्स एंड आउटकम्स फॉर वेरियस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विथ मेजरेबल इंडिकेटर्स अगेंस्ट देम ओके गोटे आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आसे दैट इज इंक्लूडेड इन बजेट डॉक्यूमेंट्स ओके सो इटा मे भी पचार दे पारे फ्यूचर रे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द बजेट तो एथरे सब डॉक्यूमेंट दिया जाए सो आर्टिकल 112 ओके सो मनी बिल्स आर्टिकल 110 रे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स एटा तुम जानथिबो ओके नेक्स्ट कम्स द आर्टिकल 113 दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स आल्सो एनी डिमांड फॉर ग्रांट shall not be made except on recommendation of president recommendation पर ही पार्लियामेंट आगे प्रेजेंट करा जाए सो आर्टिकल 112 annual financial statement so this is the budget okay this is the budget our budget word mention है constitution रे as you all know so article it is called the annual financial statement all right so sorry so this is annual financial statement तो तमरो देखिबो तम लक्ष्मीकांत रे भी देइजी तमरो बजट पासिंग बेले गोटे appropriation bill पास हुए गोटे फाइनेंस बिल पास हुए ओके फाइनेंस बिल एंड appropriation bill so appropriation bill that is expenditure from the consolidated fund of India okay फाइनेंस इज इनकम ओके जोटा कि appropriation माने एक्सपेंडिचर जोटा कि गवर्नमेंट हाथ रु जीवो फाइनेंस बिल जोटा गवर्नमेंट पाखो को आसीबो ओके सो देखो तमरो जेमती लक्ष्मीकांत रे भी तुम पढ़ले भी ही एटा कर दे परिबो appropriation bill और फाइनेंस बिल सो बजट रे फाइनेंस बिल appropriation बिल ही आसे फाइनेंस बिल एंड appropriation बिल ही प्रेजेंट करा जाए ओके appropriation deals with expenditure finance deals with income contingency bill सेमती किछि नाही ओके contingency bill सेमती किछि नाही this is a made up statement okay so contingency so expenditure कोड होबो consolidated fund रो consolidated fund as you all know this is dealt with under article 266 okay article 266 deals with consolidated fund and the public account of India and every state and the contingency जोटा कहउछ सेटा article 267 that deals with contingency fund at both union and states okay so इटा सब गला तमरो बजेट डॉक्यूमेंट्स ऊपर
तो FRBM जेहेतु मेंशन करा है FRBM भी इंपोर्टेंट तुम देखि दवा एटी ओके सो दिस इज द टेबल दिस इज द कंटेंट टेबल ऑफ FRBM रे तमरो चारिटा जिनस रही ओके गोटे हूँ माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट गोटे हूँ मीडियम टर्म फिस्काल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड पाथ फॉर फिस्काल कंसोलिडेशन ओके एटा 1 2 3 देछि बट एटा 1 2 3 4 these 4 1 2 3 4 these are the components of FRBM Act okay FRBM Act 2003 all right so FRBM Act was enacted in 2003 for to reduce the deficit and thereby debt of the government to a sustainable level over the medium term okay so FRBM Act 2003 okay and the fiscal responsibility budget management rules 2004 so the framework mandates that central government should limit the fiscal deficit up to 3% of GDP by 31 March 2021. Okay, it further provides that central government shall endeavor to limit the general government debt to 60% of GDP. Okay, general government debt means both central debt plus state debt. Okay, should be limited to 60% of the GDP and central government debt should be 40% of GDP. Okay, central government jodi 40% rahibo, state rahibo 20%. Okay, so 60%. Okay, by 31st March 2025. Okay, as on date, the fiscal deficit, the government has revised its fiscal deficit target to 4.8% of GDP, 4.8%. Okay, this is in line with the commitment made at budget speech in the financial year 2025-26 is projected at 4.4%. Okay, तो 2025-2026 रे टार्गेट अछि 4.4%. ओके 4.4% अछि बट प्लीज नोट FRBM एक्ट हिसाब रे 3% करिवार अछि ओके फिस्कल डेफिसिट सो अगेन सेम जिनस देछि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट दीज आर ऑल प्रोवाइडेड विथ द FRBM एक्ट ओके so again there is a statement of deviation explaining the reason for deviation from the fiscal target okay जेन तमरो सपोज किछि गोटे नेचुरल डिजास्टर हो कि वार हो कि सपोज कोरोना टाइप पैंडेमिक हो तो तमरो किछि देछि तम जदी तम again it is also a criticism of FRBM act okay FRBM act that तम जदी बहुत गोटे तुमको चाहिए तुम रिजन देकी तुम तुम फिजिकल डेफिसिट टार्गेट को अचीव न कले भी चली पार खाली रिजन देदेव तो सेमती किसी स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क नहीं तो गवर्नमेंट रेगुलरली टार्गेट टाको ब्रेकअप करे लाइक टेकिंग ऑफ बजट बोरोइंग्स ओके सो गवर्नमेंट एगुडा रेगुलरली break करे so this is a criticism of FRBM act because the compliance requirements are not that stringent okay so this is everything about this question yeah एबे गोटे देखिलो एटा सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स ओके जदि 3 रो अधिका वर्ड सेम थिवो ता आइदर ए दीटा भितरु ही कोटा गोटे ऑप्शन राइट आंसर हबो ओके एई जिंसटा को हमें अलगा क्वेश्चन रे भी देखिबा एई 2019 रे ही ओके so now comes the next question so which of the following is the middle unit of 3 tier panchayat raj so gram panchayat panchayat samiti jilla parishad panchayat gram sabha okay so देखो तुम एटा गोटे भल डायग्राम अच्छी तुम ओडिशा गवर्नमेंट रो ओके सो पंचायत राज रो 3टा लेवल अच्छी जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत समिति ब्लॉक लेवल ग्राम पंचायत विलेज लेवल ओके विलेज लेवल ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय पीईओ पंचायत समिति हेडेड बाय बीडीओ जिला परिषद इज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल यूनिट पचारजी तो पंचायत समिति इज द आंसर ओके सो अगेन जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत हेडेड बाय सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स ओके एटा तुम जानि थि ऑलरेडी सो नथिंग मोर टू से ओके सो ओके इट इज ऑलरेडी 9 so I think okay so question number 16 टा रही गला okay so I promise हमरो नेक्स्ट क्लास रो हम क्वेश्चन नंबर 16 रो ही स्टार्ट करिवा okay so I think this was for today